Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 72 for that topic sexual reproduction in flowering plants. Very interesting topic that we have been learning. Now we are discussed regarding that floral parts which produce male gamete and female gamete. We have seen that the anther of the flower produces the pollen grains. Okay, suppose this is the anther of the flower. Then it diagrammatic I am showing. These are that pollen grains which it produces. Okay. Whereas that gynoecium or pistil has got the part known as ovule, and inside that ovule, that would say that ovary containing that ovule, inside that ovule, this is that ovary suppose, okay, and then this is that ovule. Now inside that ovule, embryo sac is present and that contains the female gamete, we say that egg. और इसके बाद में ये तो ये ovary है, style है, then that stigma is also there, that may be at the same level or some other level. Okay, so the pollen grains are released everywhere. These are the pollen grains. Now another very important thing you know. So this is anther. What is this? Anther. Then these are the pollen grains. Okay. These are the pollen grains produced in very large number. Pollen grains are produced in very large number. Okay. And they are shed from that anther when the anther undergoes dehiscence. Okay. This is the male sex organ, that is androecium, stamen. And this is the female sex organ, that is called as the carpel or pistil. So pistil has got this ovary. Ovary has got this ovule. And ovule produces the egg. And that is the female gamete. And pollen grain will produce the male gamete. And it is very essential that male gamete and female gamete, when they get fused together, then the zygote will be formed, then the embryo will be formed, then that new plant is possible. So try to understand the story. Okay, this is the male sex organ part known as the stamen. Okay, this is the female sex organ part known as carpel or pistil. Now male sex organ stamen has got anther. We have discussed all in detail about that in the earlier videos. Then that anther produces enormous number of minute dust particles like pollen grains. And at maturity, when that anther undergoes dehiscence, the pollen grains will be released. Okay, they will be release free. अब आगे आपका आप देख लो. ओके, पोलन ग्रेन्स बनाने तक का जो कार्य है वो किसका है? दैट इज अबाउट दैट एंथर. एंड वंस द एंथर dehisces, देन दैट पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्री, रिलीज फ्री. अब इधर ये हो गया मेल का पार्ट. और पोलन ग्रेन हैज गॉट द पोटेंशियल, इफ इट विल रीच टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन, it has got the potential to produce two male gametes in that structure, male gametophyte. They will be required for fertilization. समझ लो अच्छी तरह से. मैं एक सेंटेंस अभी कहा था. If that pollen grain would reach to their destination, अगर सही जगह पर जाके पहुंच गए पोलन ग्रेन तो आगे की बात है, नहीं तो नहीं. अगर सही जगह पे नहीं गए, then that pollen grain will become dead. अब उनकी डेस्टिनी है, तो इसलिए वो लॉटरी लगना चाहिए. इसलिए that tremendous number of the pollen grains are released. एक तो भी उसमें से जाएगा. जैसे हम देखते हैं लोग जो ऐड करते तो फ्लायर्स बेचते हैं. आजकल कम हो गए, आजकल सोशल मीडिया पे मैसेजेस ज्यादा आते हैं, पर पहले कैसा रहता था? वो फ्लायर्स वाला जमाना था. ओके, to the newspapers or anywhere, the flyers or that pamphlets were distributed for ads. आज भी है लेकिन कम हो गया. आज सोशल मीडिया पे ज्यादा आते. तो उस एड का ये क्या था?
अगर वो सही जगह पे गया तो काम करता था। सपोज 10,000 पैम्पलेट्स have been distributed, तो इसका मतलब मेरे क्लास को 10,000 स्टूडेंट्स आने वाले हैं ऐसा नहीं है, अगर क्लास का मैंने पैम्पलेट भेज दिया तो। ओके, 10,000 में से एक तो सही जगह पे जाने वाले कितने हैं, यानी जो स्टूडेंट है 11th 12th के जिसके क्लास की मैं ऐड कर रहा हूं वहां तक कितने जाते हैं, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, isn't it? So that accordingly, अगर वो समझो 10,000 में से 100 स्टूडेंट्स के पास चला गया और सही जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हमने कॉलेज के बाहर इधर उधर तो जाते, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का होना चाहिए 11th 12th। अगर वो कॉलेज के किसी बीएससी के स्टूडेंट को मिल गया या आर्ट्स के स्टूडेंट को मिल गया तो कुछ यूज नहीं। सो इफ दैट पैम्पलेट विल गो टू द प्रॉपर स्टूडेंट, तो उसमें से भी 100 में से भी एक बाकी के बोलेंगे हमने तो लगा दिया वही क्लास दूसरी जगह, अभी हमको जरूरत नहीं है। एक उसमें से 5% 10% अगर इंप्रेस हो गए उस पैम्पलेट से तो कॉल करेंगे। ओके, और कॉल करने के बाद अगर वो पूरा जो ट्रांजैक्शन है फीस वगैरह सब अफोर्डेबल है तो उसमें से 10 में से 1 या 2 ज्वाइन हो गए। सही है ना, यानी इतने बड़े पैमाने पे अगर काम किया तो आउट ऑफ 10,000 1 or 2 विल ज्वाइन, लाइक दैट, ऐसा है। लेकिन मेरे भाग्य से आज तक ऐसी नौबत या ऐसी समय मुझे नहीं आने दिया भगवान ने। माउथ पब्लिसिटी से ही मुझे स्टूडेंट्स मिलते गए, हार्डली आई वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पैम्पलेट्स देयर। ओके, कहीं नई जगह पे गए तो, अदरवाइज नॉट। माउथ पब्लिसिटी से मुझे मिलने लगे थे स्टूडेंट्स, पर ये जनरल एड का मैं बोल रहा हूँ, वैसा ही है। सपोज 10,000 pollen grains are shared, out of that hardly 1 2 3 4 5 10 suppose have reached the proper destination, then only they will undergo further germination to produce 2 male gametes for fertilization, otherwise not, otherwise they will become dead। अब देखो फीमेल स्ट्रक्चर जो है पिस्टिल कार्पेल, that has got ovary, style and stigma। Okay, so ovary has got ovule, and ovule, inside the ovule we have discussed the structure of ovule in the last few lectures there, do refer that। Inside that ovule or megasporangium, egg producing organ, embryo sac is produced at maturity, and that embryo sac is containing 1 female gamete egg required for fertilization। कितना छुप के बैठा है। So now you can easily understand what should happen, क्या होना चाहिए। If male gametes are to be produced in pollen grains and if egg is to be produced in the ovule, then first very important thing required for fertilization is that they should brought closer, isn't it? उनको क्लोजर तो लाना पड़ेगा ना भाई। And for that purpose, pollination event has been given by nature। So pollination, why pollination is needed का आंसर ये है, that pollination is needed what for what, to bring that pollen grains, to bring the pollen grains producing male gamete, प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स, जो मेल गैमेट बनाने वाले पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स, एंड दैट ओव्यूल प्रोड्यूसिंग एग क्लोजर टू ईच अदर। ओके, एंड देयरफॉर पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप essential for fertilization to occur। अगर fertilization होना है then definitely that male and female gamete should come closer। तो marriages इसके लिए तो होते हैं ना, otherwise how that male and female will come closer। आजकल तो कुछ भी चलता है, but particularly ethically अगर जाना है तो that
मेल एंड फीमेल आर ब्रॉट क्लोजर, एक पवित्र रिश्ते से उनको बांध दिया जाता है, उसे हम विवाह बंधन कहते हैं, मैरिज कहते हैं. सो सेम लाइक दैट pollination is considered as that marriage of flower. Pollination is the marriage of flower. Okay. So can we define pollination? Very simple. Pollination की definition आप दे सकते हो. Pollination is defined as a mechanism or process required for fertilization. And pollination is a process of transfer of male reproductive bodies pollen grains. Pollination is a process of transfer of male reproductive bodies pollen grains shed from anther onto the stigma of carpel or pistil. ये कार्पेल या पिस्टिल जो है उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके जब गिर जाएगा और सही ऑफ प्रॉपर फ्लावर, यानी अगर मान लो इट इज द पोलन ग्रेन ऑफ सनफ्लावर फ्लावर एंड इट इज गोइंग ऑन समझो रोज पे चला गया, देन दैट विल नॉट बी ऑफ यूज, isn't it? If it is reached to the proper stigma of that particular same type, then that is called as what? Pollination. So definition pollination की देखो क्या दिया है. It is a process by which the pollen grains shed from anther get deposited on the stigma of carpel. Stigma of carpel पे ये जमा हो जाते हैं, so that male gamete and female gamete can come closer. वो कैसे आते हैं वो फर्टिलाइजेशन के टाइम हम देखेंगे. But you should understand this concept very properly. So I am confident that you must have understood this part, which is very simple part. In the next lecture, we shall learn about the types of the pollination, agents of the pollination, and many more articles. Okay. So do like and share this video to your friend circle, and do subscribe to my XIIth Biology and XIIth Biology Shorts channel. Thanks a lot.